Hello everyone. Today I am going to teach monitoring of antimicrobial stewardship program. This is taken from my seminar. It would be important for PG students and not for UG students. Starting with what is monitoring or what is measurement. So if we are doing an activity, we need to monitor it or we need to quantify it. There are by two processes, the process measures or the outcome measures. The process measures are related to how the action is being done, and the outcome measures the what is the result of the action done. For example, I want to throw a ball in the basket. So what would be the process, like the stance I will take, the power I will use, the distance, and what would be the outcome? The outcome should be that my ball should fall into the basket. Sometimes it will just touch the ring, sometimes it would be an underthrow or an overthrow. So what outcome it has, that is an outcome measures. In AMSP, the process would be all the steps we are doing, be it your front end strategies, be it your end or back end strategies, or a mixture of both. And the outcome would be how much we are able to reduce the unnecessary use of antimicrobials. Starting with the outcome measures is important, and in this only we have two things, DDD and DOT. The DDD would stand for defined drug dosage, and DOT would stand for days of therapy. So in outcome measures, we have antimicrobial consumption indicators, the clinical outcome indicators, microbiological outcome indicators, and the financial outcome indicators. Further, we can divide antimicrobial consumption indicators into quantitative, qualitative, and some other. So quantitative, in which we can quantify things, under which our DDD and DOT will come. Then qualitative, we will read about SAR, or we will see about and see other things. In clinical outcome indicators, we have mortality and morbidity indicators. So basically, what would be the data source for these? Like how would we collect data for the measurement of the outcome? So it can be on two bases, either the geographical data or the healthcare facility data. The geographical data, we have the manufacturer level data. So in which from the manufacturer, we can say how much drug they produced, how much it was sold, and not just for human use, but also for non-human use, like veterinary or hospital pharmacy. For like veterinary and agriculture. But it is just a raw data, and it would not tell us about the exact usage. Obviously, some of it would be sold, some of it would go to waste or anything. Then comparing to pharmacy level data, what the pharmacies will procure and what they will sell. So this only tells us about the human data. But again, it is not an end user data, and we cannot say okay, these drugs which were sold were actually also used by humans. Coming to prescribing records and health insurance data, they are not possible in an Indian setting because we do not have electronic prescriptions or electronic medical records everywhere in the country, and it is very difficult to gather these records manually for all over the India. Similarly, health insurance data is not available and it is not possible in the country. In the community survey, we can actually see how much antibiotic is used, but it is tedious, it is time consuming and labor intensive. Coming to healthcare facility data, we have the procurement data, how much a hospital or a healthcare facility has obtained in the pharmacy, the dispensing data, how much it has dispensed, how much medication it has dispensed. But again, the problem would arise that some of the medications might not be available, and so the patient would obviously gain them from the outside. Plus it does not include
it does not include basically medications purchased from outside the chemist. The prescription data, if manual, it would be very tedious. We will have to maintain three records, one for the patient, one for the pharmacy, and one for the AMS team. Electronic records not in India, so not again very difficult. Nursing chart data would be how much they have procured for a location, for example, for a surgical ward, and how much they have actually given to the patient. Like from we can say nursing records कि actually patient को कितनी medication दी गई थी, and then the patient level data can be collected during our audit and feedback, which is a part of our back-end strategies. Then going to talking about antimicrobial consumption and antimicrobial usage. So these two are different terms. Antimicrobial consumption is an indirect estimate as it is derived from the data which we are taking. There is no patient level data obtained. It is collected from the manufacturer, pharmacy, procurement, or the dispensing data. It is less resource intensive and but does not tell about the actual usage. It is basically how much the drug was produced and how much it was sent to other places, but does not tell us how much it was actually utilized. Whereas antimicrobial usage or use actually tells us how much drug was used. So it is derived from pharmacy dispensing data, electronic prescriptions, and nursing chart, but it is very time consuming and it can be done during prospective audit and feedback. Obviously, as obviously it won't be possible for OPD patients as we are obtaining the data during a prospective audit and feedback. So what is the difference between antimicrobial consumption and antimicrobial usage? The AMC is facility based. We have hospital procurement data, pharmacy dispensing data, and nursing procurement data. It tells us which type of drug and how much was it produced. No patient level information is there, and as it is an indirect estimate, there may be some mistakes, but resources required are less, and it can be collected even if the data is recorded manually, and we can do it at our convenience, say monthly, annually, or biannually. Whereas usage tells us about the actual patient level data, tells us who actually used the antibiotic, how, when, and why, as in for what indication and how much dose at what frequency. Patient level data is collected, so it is a direct estimate of the usage, but obviously it is resource demanding and should be collected in real time. What are the parameters of antimicrobial usage? We talked about DDD and DOT, which are actually the quantitative measures, that is defined daily dose and days of therapy. Then we have standardized antimicrobial standardized administration ratio, PPS, AFD, PDD, proportion of patients on antimicrobial therapy, proportion of DDDs in aware group, ratio of broad spectrum antibiotic to narrow spectrum antibiotic, proportion of broad spectrum antibiotic among total antibiotic consumed. For us, we have importance of DDD and DOT, which is also majorly given in our book. So let's talk about them. Starting with DDD, what is actually defined daily dose? It is an average maintenance dose per day for a drug which is used for its main indication. It is not the actual maintenance dose, or it may not be even a DDD might not even coincide with a dose which is frequently used for treatment. It is assigned for drugs having ATC codes. ATC is anatomical therapeutic classification system. It is assigned by WHO, and WHO assigns antibiotics or antimicrobials one unique ATC code. Now this ATC code, though is unique for each drug, it is also unique for each drug and its route. For example, if I have ciprofloxacin for oral, for through mouth, we can say that it has a DDD of 1 gram,
but intravenous it might have a DDD of 0.5 grams. Some non-antibiotics also have a DDD, but some antibiotics which have ATC might not have DDD. For example, are prazomicin, for example, are tenofovir, and some antibiotic might also have, like we said ki same antibiotic different route different DDD, same antibiotic different indication of use a different DDD. For combination drugs, if the drug has only one active agent, for example an amoxiclav, it is amoxicillin plus clavulanic acid. It has only one active agent, that is amoxicillin. So its DDD would be same as that of amoxicillin. But in cotrimoxazole, trimethoprim and sulfamethoxazole, both are active agents. So this cotrimoxazole would have a DDD completely different from both trimethoprim and sulfamethoxazole. DDD is just a rough estimate, and it is a fixed unit of measurement for technical uses only and not for medical use. It does not tell us about the therapeutic dose, the loading dose, the maintenance dose, nothing. Now they have given one thing, that how do we assign the DDD value. So the DDD value for if the drug is given for more than 7 days, it is same as the maintenance dose. But if it is given for less than 7 days, then we add loading and maintenance dose and then divide it by the total number of days it was given. How do we calculate? Just a second. Yeah. So how do we calculate the antimicrobial consumption value? It is calculated by total gram of drug consumed in a defined period of time by the DDD value. So how would we calculate the consumption? The total number of packets into the packet size into the strength of the tablet. For example, I take ciprofloxacin and I say that 10 packets of ciprofloxacin, each packet having 20 strips, which each strip having 10 tablets, and the strength of each tablet was 5 milligrams. And the DDD value is 0.5. So what would be the AMC consumption value? It would be 10 packets were there, each having 20 blisters with 10 tablets each of 5 mg strength divided by the DDD, that is 0.5 mg. So see, this would be the DDD. It would be 2, 1, 2, 3 and 4. So the DDD would be 20,000. For more than 2 active agents, DDD is expressed in unit dose. Say for example cot, the DDD would be something given as 2 UD, or it can also be given as like 40 by 80 mg or something like that. Now, but the DDD would obviously vary according to the population size, because now here we are using 10 packets. Maybe in some hospital only 1 packet was required, or let's say ki 1 packet contained only 10 blisters and only this much was required. So so this antimicrobial consumption value will obviously decrease. So this is antimicrobial consumption. So this was an absolute value, so which may change, but the density would remain constant.
So we take out the antimicrobial consumption density, which is the job in according to the geographical region. It would be the DDD per 1,000 inhabitants per day. This would be the formula ki number of DDD time in a defined time period by the population size into the time period in days into 1,000. For facility specific, this is the formula, and we calculate differently for OPD and IPD, and it measures hospital activity. So what are hospital activity measures? So while calculating this facility specific, in the denominator we have quantity of hospital activity measures, and we have 7 hospital activity measures, which are patient days, the days present, bed days, occupied bed days, admissions, billing days, and discharges. We need to know starting from patient days. So patient days is कि कितने दिन पेशेंट हमारे पास रहा. सो हर पेशेंट के लिए हम एक दिन का कैलकुलेट करते जाते हैं कि जैसे एक पेशेंट 10 दिन रहा, दूसरा पेशेंट भी 10 दिन रहा, तो टोटल 20 पेशेंट डेज हो गए. अब इसके लिए दो मेथड्स हैं. वी हैव टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग पेशेंट डेज, विच इज फर्स्ट इज वी काउंट एट अ फिक्स्ड टाइम. एक फिक्स टाइम पे हमने काउंट किया. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं 10 बजे काउंट करूंगी. अब कोई पेशेंट सुबह 9 बजे एडमिट हुआ था, तो वो भी मेरा काउंट होगा. और अगर कोई पेशेंट 11 बजे डिस्चार्ज हुआ सुबह के, तो वो भी मेरे पेशेंट डेज में काउंट हो गया. दूसरा मेथड है कि मैं एडमिशन और डिस्चार्ज डे को एक ही काउंट करूं. अब आज मैंने जो एक पेशेंट एडमिट हुआ था 1 को और वो डिस्चार्ज हुआ था 10 को, तो वो कितने दिन रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पर क्योंकि मैं एडमिशन डे और डिस्चार्ज डे को एक ही काउंट कर रही हूँ, तो पेशेंट डे मेरे 9 आएंगे. देन टॉकिंग अबाउट डेज प्रेजेंट. अब इसमें और पेशेंट डेज में क्या डिफरेंस है कि पेशेंट डेज में तो हम डिस्चार्ज और एडमिशन डे को एक काउंट कर रहे थे. इसमें डिस्चार्ज और एडमिशन डे को हम हमेशा 2 काउंट करेंगे, और चाहे पेशेंट एक फुल कैलेंडर डे में चाहे वो 15 मिनट के लिए भी रहा, तो भी उसका पूरा दिन काउंट होगा. देन बेड डेज की टोटल नंबर ऑफ बेड्स हमारे हॉस्पिटल में कितने हैं, ऑक्युपाइड बेड्स की कितने ऑक्युपाइड हैं, और एडमिशंस के हमने कितने एडमिशन किए, चाहे वो डे केयर के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म फैसिलिटी केयर के लिए हो. So what is the advantages of calculating a DDD? That it is internationally recognized and it converts raw data into utilization data because it is standardized, so it is very easier to compare, and it can be calculated even if patient level data is not available. But DDD is only mentioned for adult patients. DDD is not given for any pediatric patient, so we cannot calculate antimicrobial consumption for pediatric patients. It is not given for topical antibiotics, and some antibiotics like plasmazine and tenofovir, despite they have an ATC code, they do not have a DDD value. We always have to use a WHO updated version, and there can be bias against combination therapy. अब इसका मतलब क्या है कि bias against combination therapy कि हो सकता है कि एक हॉस्पिटल में तो किसी 3 अलग अलग ड्रग्स चला रखी है मैंने, और एक हॉस्पिटल में उन 3 अलग ड्रग्स की जगह एक मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चला रखी है. सो ऑब्वियसली जिसने 3 नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चला रखी है उसका DDD वैल्यू ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के लिए, एंड इट obviously does not reflect the actual dose used. Then moving on to the days of therapy. Days of therapy की नाम से ही पता चल रहा है कि पेशेंट को कोई भी दवाई हमने दी है तो वो उसके डे ऑफ थेरेपी में काउंट होगा. डाटा कलेक्ट करने के लिए ओपीडी पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्रिप्शंस कलेक्ट करते हैं, आईपीडी पेशेंट्स के लिए या तो प्रिस्क्रिप्शंस या फिर उनके फार्मेसी रिकॉर्ड्स या नर्सिंग चार्ट रिकॉर्ड्स. अब इसके लिए भी हमारे 2 मेथड हो सकते हैं. या तो आप एक दिन में उस पेशेंट को कितनी एंटीबायोटिक्स दी हैं उसका टोटल कर लो कि हर दिन का
अलग अलग लिखते गए फिर उसका टोटल किया, या फिर एक एंटीबायोटिक कितने दिन चलाई है, इधर मूव दिस वे और वी कैन मूव दिस वे, कि एक दिन में कितनी एंटीबायोटिक्स दी हैं या फिर एक एंटीबायोटिक हमने कितने दिन के लिए दी हैं. एनीवे दिस विच एवर वे यू गो द सम वुड बी सेम. So it is and total number of antibiotics or antimicrobials received for a defined period time. Again, we have to calculate the density. So same formula as we talked about in DDD. The advantage is it is a dose independent metric and can be used for children, which cannot be done for DDD. Patient level data is collected. तो इसमें प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस पता चल जाती है कि क्या इंडिकेशन के लिए दी गई, कितने डेज के लिए दी गई, कितने फ्रीक्वेंसी में दी गई, सब कुछ बता देता है. बट it still won't represent the actual drug usage. Then talking about SAR, which is Standardized Antimicrobial Administration Ratio. अब बाकी सब में ना हमने रिस्क फैक्टर एडजस्ट नहीं किया था, इसमें हम रिस्क फैक्टर और लोकेशन भी एडजस्ट कर लेते हैं. माने कि पेशेंट को अगर किडनी डिसीज थी तो रीनर एडजस्टमेंट की होगी, अगर सर्जिकल वार्ड में है तो उसको ज़्यादा एंटीबायोटिक्स चले, या ऑन्कोलॉजिकल में तो और भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स चले. तो ये सुपीरियर इंडिकेटर है दो फैसिलिटीज़ के बीच में एंटीमाइक्रोबियल कंजम्पशन बताने के लिए. लाइक एवरी स्टैंडर्डाइज्ड रेशो we have seen in we know device utilization ratio also. Similarly, we have observed upon predicted antimicrobial use. So how do we calculate the observed antibiotic use? By seeing the days of therapy and the predicted. Either we can take the mean, or in simpler terms like in India, what we can do, we can take a 3-year pooled mean AMC data and then see the predicted values. If it is more than 1, overuse of antibiotics, less than 1, underuse, or equal to 1, it was equivalent to the predicted antibiotic usage. And it can be stratified according to patient age, patient care location, like patient age की बड़ों में ज़्यादा यूज है, elderly में या adults में या children में. Patient care location like in it was wards, in ICUs or critical care units or oncological units. Then antimicrobial agent category, जिसमें हमने इसको 5 कैटेगरीज में बांटा है. कैटेगरी 1, all broad spectrum antibiotics for hospital acquired infections and multi drug resistant organisms. Category 2, broad spectrum antibiotics for community acquired infections. Category 3, antibiotics for gram positive infections. Category 4, antibiotics used in surgical prophylaxis, and category 5 contains all antibiotics. Then PPS, or point prevalence survey, it is again a qualitative indicator कि collection of antimicrobial treatment data. Point prevalence हमेशा एक fixed point पे ही होता है, तो ये भी एक फिक्स पॉइंट पे हमने डाटा कलेक्ट किया. उससे हमें क्या क्या पता चलेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल दी गई किस इंडिकेशन के लिए, और क्या वो हमारी नेशनल पॉलिसी और लोकल एंटीबायोग्राम के अकॉर्डिंगली है या नहीं. इससे क्या पता चलेगा कि हमारी एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन कितना हो रहा है आईपीडी में. डिफरेंस पता चलेगा रेट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल प्रिस्क्रिप्शन विद इन वार्ड्स, मतलब within a hospital की different wards में, different hospitals में, different states में. और इससे को हम evaluate कर सकते हैं हमारा AMSP और सब decision making. We need to know about prescribed daily dose, कि कितनी average dose हमें prescribe करी गई, किस इंडिकेशन, हर इंडिकेशन के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकती है. अगेन हर पेशेंट की एज के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकती है, होस्ट पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकती है. एंटीमाइक्रोबियल फ्री डेज, पेशेंट कितने दिन बिना एंटीमाइक्रोबियल के रहा. देन टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल आउटकम इंडिकेटर्स, इसमें हम मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी इंडिकेटर्स देखेंगे. सो मोर्टैलिटी इंडिकेटर्स
में क्या आएंगे कि और कॉज इन हॉस्पिटल, माने कि किसी भी रीजन की वजह से अगर पेशेंट की डेथ होती है तो हम इसको ऐड करेंगे। ऑल कॉज 30 डे, अगर पेशेंट डेट ऑफ एडमिशन के बाद 30 दिन में उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो उसके घर पे हो, चाहे कहीं भी हो, इसको हम ऐड ऑन करेंगे। इन्फेक्शन स्पेसिफिक, अब इन्फेक्शन स्पेसिफिक में हम कहेंगे कि अगर वो किसी इन्फेक्टिव इटियोलॉजी की वजह से ही मरा तभी हम उसको ऐड ऑन करेंगे। एमडी आगो रिलेटेड की मतलब हमारे अपने पेशेंट का कल्चर भेजा था और एटलीस्ट एक आइसोलेट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट था। देन स्टैंडर्डाइज मोर्टैलिटी रेशियो, अगेन ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड डेथ्स। मूविंग ऑन टू मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, ऑल कॉज लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, कि किसी भी रीजन की वजह से पेशेंट कितने दिन हॉस्पिटल में रुका। इन्फेक्शन स्पेसिफिक लेंथ ऑफ स्टे, मतलब कि किसी इन्फेक्टिव एटियोलॉजी की वजह से पेशेंट कितने दिन रुका। स्ट्रैटिफाइड इन्फेक्टिव स्पेसिफिक एलओएस, माने कि अब इसमें सिर्फ हमने एक डिसीज उठा ली। इन्फेक्शन स्पेसिफिक में सारे इन्फेक्शंस, स्ट्रैटिफाइड में कोई एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से कितने दिन रुका। प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स विद क्लिनिकल फेलियर, कि किन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स चल रही थी उनमें से कितनों को एक्चुअली क्लिनिकल फेलियर हुआ। क्लिनिकल फेलियर कैसे बता सकते हैं कि या तो पेशेंट स्टेबल नहीं हुआ, उसकी कंडीशन डेटेरियोरेट हो गई है, या फिर उसे कोई फीवर आ गया या एनी साइंस ऑफ सेप्सिस हो गया उस पेशेंट को। देन ऑल कॉज रीएडमिशन विद इन 30 डेज, डेट ऑफ डिस्चार्ज के 30 दिन तक अगर पेशेंट एडमिशन हो गया है किसी भी रीजन की वजह से, और इन्फेक्शन रिलेटेड माने कि सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से कितना हो गया है। वार्ड टू आईसीयू ट्रांसफर, कितने पेशेंट वार्ड से आईसीयू में गए, माने कि कितने डिस्टेबलाइज हुए, कितनों की तबीयत ज्यादा खराब हुई। एंड एंटी माइक्रोबियल रिलेटेड टॉक्सिसिटी रेशियो, कितने पेशेंट को कोई ड्रग लेने से एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिले। देन मूविंग ऑन टू microbiological outcome indicators, we have antimicrobial resistance outcome indicators in which we have number of isolates for a particular resistant divided by the total number of isolates. For example, कि स्टैफ ऑगस में से कितने मेथिसिलिन रेजिस्टेंट थे या एंटेरोकोकस में से कितने वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट थे। इससे हमें पता चलता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या बर्डन है, और इससे हम बता सकते हैं कि भैया एएमएस इंटरवेंशन की जरूरत क्या है। Then number of isolates of a particular resistant phenotype by patient days, which actually tells us about the impact of infection control practices. Clostridium difficile infection ratio, क्योंकि Clostridium difficile multiple antibiotic use से ही होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरोक्विनोलोन से रिलेटेड है Clostridium difficile का इन्फेक्शन, और any healthcare acquired infection rate. Then we have financial outcome indicators, जिनके सिर्फ हमें नाम जानने, cost volume या cost density कितनी आई। This was all about outcome measures. Now talking a few words about the process measures. We have compliance to guidelines, की empirical therapy guidelines कितने में दी गई, targeted treatment guidelines कितने में दी गई, और surgical prophylaxis कितनों को मिला। एम्पेरिकल गाइडलाइंस में हम देखेंगे किसने टाइम पे एम्पेरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट हुई, किस इंडिकेशन के लिए स्टार्ट हुई। टारगेटेड में हम देखेंगे कि क्या एम्पेरिकल एंटीबायोटिक जो स्टार्ट हुई उसके बाद जो हमारी रिपोर्ट आई उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन को रिवाइज किया गया, एस्केलेट किया गया या डी एस्केलेट किया गया, या कोई एंटीबायोटिक चेंज की गई, कोई एंटीबायोटिक जो यूजफुल नहीं थी उसे स्टॉप कर दिया गया। सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में क्या उसका इंडिकेशन था, कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए दी गई, कितनी डोज में, कितने टाइमिंग्स पे दी गई, और कौन सी दी गई एक्चुअली। देन प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड, कि क्या उसका प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर एंटीबायोटिक का इंडिकेशन था, क्या उसके लिए ऑथराइजेशन ली गई थी, क्या उसको 48 आवर्स बाद रिव्यू किया गया था कि हम एंटीबायोटिक स्टॉप कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, उस पर डिस्चार्ज एडवाइस लिखी थी, और उस पर प्रॉपरली पेशेंट को बताया था कि अब आपको कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, कितनी देर के लिए, या कब आपको फॉलोअप के लिए आना है। देन डायग्नोस्टिक स्टूवर्डशिप, की कल्चर्स भेजे गए थे,
करेक्ट राइट पेशेंट के लिए राइट टाइम पे राइट टेस्ट भेजा गया था या नहीं, उस टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद कितनी जल्दी एक्शन लिया गया था। देन एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शंस, कि क्या उस पेशेंट को डोज लिख तो दिया डॉक्टर ने बट क्या एक्चुअली डोज उसे सही मिली, क्या उसका इन्फ्यूजन टाइम सही था, जैसे हम बोलते हैं बीटा लैक्टम्स को थोड़ा लॉन्ग इन्फ्यूजन में दिया जाए, लोडिंग डोज दी गई थी या नहीं। फॉर एग्जांपल हम कोलेस्टीन के लिए कहते हैं कि भैया लोडिंग डोज दो पेशेंट को, क्या कोई डोज मिस हुई थी और उसके लिए क्या रीनल एडजस्टमेंट की गई है अगर पेशेंट को रीनल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम कहते हैं कि भैया कोलेस्टीन के लिए हमें करना पड़ेगा पर प्रोग्रामिंग के लिए नहीं करना पड़ेगा। So this was all about monitoring of AMSP, जिसमें हमें मेन दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट हमारा है डिफाइंड डेली डोज एंड नेक्स्ट हमारा है डेज ऑफ थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, they can come as a question and in the previous year question papers I have seen, so they have been asked as a question. Thank you. For any doubt, you can write it down in the comments and I will try my best to answer it. And please like, share and subscribe to my channel. I would try to make more videos more frequently. This is the first time I'm using all this software, so I hope it goes all well. And yeah, thank you.